अब खुलेगा किस्सों का पर्चा जब होगी चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा विद आरजे सौम्या ओनली ऑन रेडियो टिश्यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं सौम्या मिश्रा और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं चाय पे चर्चा पे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं तो आप कहाँ से? वेरी कनाडा से? जी, मैं कनाडा से हूँ। कनाडा, विच पार्ट ऑफ कनाडा? टोरंटो? टोरंटो, यस। ओके, ये जी। तो बहुत बहुत शूट। स्वागत है आपका चाय पे चर्चा पे। और आपकी जो फिल्म है, वैसे अजय देवगन मेरे फेवरेट है तो ऑब्वियसली मैं उनकी सारी फिल्म देखती हूँ, बट द टॉपिक मैं इज नहीं हूँ ऑल्सो आपका मैं नहीं हूँ आपका फेवरेट एज फिल्म मेकर। देखिए कितनी अच्छी बात मैंने करते हैं आप। मैंने नहीं, 45 फिल्में बनाई है। मिस्टर हम पांच, वो 7 दिन, मिस्टर इंडिया, जुदाई, नो एंट्री, वांटेड, कंपनी, इतनी कितनी पिक्चरें बनाई और कोई भी आपकी फेवरेट नहीं है। मैं भी फेवरेट नहीं, नहीं हूँ आपका। नहीं, ऑफ कोर्स है, मैं उसी पे आई थी, बट मैं एक्टर की बात कर रही थी। अच्छा, उनकी आई थिंक जिस टाइम पे मैं बड़ी हो रही थी उस टाइम पे ही वाज वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एक्टर्स, दैट्स व्हाई इसकी वजह से। बट बात करते हैं कि आपने ये फिल्म प्रोड्यूस करने को क्यों डिसाइड किया। आई नो कि आपकी फिल्म का सिलेक्शन हमेशा बहुत अच्छा होता है, बट हाउ डिड यू डिसाइड टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड विद दिस स्पेसिफिक मूवी। because you see, this is a story of underdog. This is a story of a coach who's never been applauded, who's never been written about, who's never been, he did a lot for the sport, and yet, I mean, history doesn't carry his name. So we thought we should bring it out because he contributed a lot to the sport. He's the one who had this passion for the game and got finally the gold medal for India in the Asian Games. He took India to the semi-finals of Melbourne Olympics, which means India at that point of time was among the top five to seven teams in the world. To reach semi-finals Olympics is a great achievement. And then to win the gold medal in Jakarta Asian Games was also a great achievement. And he brought players from different states of the country, different regions of the country, and made sure that everybody gelled well, got along well, and they play as a team. जैसे इस पिक्चर की फेवरेट लाइन है, मतलब मेरी पर्सनली फेवरेट लाइन ये है कि मैदान में उतरना 11, दिखना 1, which means you go to play as a team, not as individual. I love that line, by the way. I love that line. And that is true in everything. Like when you're working as a team, you have to become that. So it's going to be a line of inspiration for a lot of coaches. Um, तो आपका स्पोर्ट्स में इन जनरल इंटरेस्ट था, दैट इज व्हाई यू पिक्ड इट, या बिकॉज इट वाज एन अनटोल्ड स्टोरी और इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी Both. देखो, as I told you, during our childhood days when we were staying in Chembur, Tilak Nagar, Township Colony, me and Anil, we both used to play football with our people, youngsters around that part of the society, that part of the colony. And then, of course, it was cricket which swept over after the country won the World Cup. So, काफी हद तक लोग पहले फुटबॉल पसंद करते थे, उससे पहले हॉकी पसंद करते थे। नॉर्थ इंडिया में हॉकी का चलन था। बॉम्बे में आई रिमेंबर माय फादर यूज्ड टू गो टू द हॉकी स्टेडियम टू वॉच हॉकी मैचेस। और फुटबॉल का शौक था, उसके धीरे धीरे मतलब क्रिकेट पे स्विच हुआ। मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट सुनील गावस्कर था। जब से गावस्कर आया तो मुझे क्रिकेट के सोचता नहीं था। आपको एक बात बता, रात को जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं गावस्कर के स्ट्रोक सोच के सो जाता था। उसकी स्ट्रेट ड्राइव, हाउ ही defended the ball, how he played the fast bowlers. I used to imagine this in my mind and go to sleep. Oh wow. So see, this, I think that is why it was very relatable to you through the film. Were there any special challenges that you had to come across while, क्योंकि okay. Yes, COVID. I mean, our film 70% was ready before COVID, before the lockdown. We had to, we spent almost 3 years waiting in different breaks. And at the same time, in between, we had the cyclone in Bombay, where my entire set was washed out. So we've had a share of troubles. We've had a share of challenges. We've been through a lot in the making of this picture. But the fact is, we didn't deter. I'm lucky that my crew was focused, was passionate, right till the end. And finally, the result is for everybody to see. It's amazing. I'm sure when you see the film, you'll know that this is a film of the year, film of the decade. Very realistic, and it is inspirational, aspirational, and influential. Of course. और गाने भी बहुत बेहतरीन है. And it's not just a sports film. It's a family drama. It's a story of father-son relationship. It's a story of husband-wife relationship. It's a story of mother and son. It's all. It covers everything. The entire spectrum of a family, and how this coach treats the players as a family whom he mentors.
That's आपको ये picture will give you those highs, adrenaline rush, and at the same time you will get up when the film is over with tears of joy and claps. I of can course. assure you that. ऑफ कोर्स, ये तो मुझे ट्रेलर देख के लग ही रहा है, आई एम श्योर जितने लोगों ने ट्रेलर देखा, क्योंकि हमने रिलीज किया अपने प्लेटफॉर्म पे भी, आई एम श्योर जितने लोगों ने देखा उन्होंने भी कमेंट यही किया है कि द ट्रेलर सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यहाँ पे आई वांट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट, इतने सारे हर्डल्स आपने बताए कि आई फॉर द मूवी एंड यू स्टिल केम फॉरवर्ड, मेकिंग श्योर दैट द मूवी इज रिलीज बिकॉज इट वाज फॉर अ कॉज, इट वाज यू आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग। जिस वक्त आप शूटिंग कर रहे थे उस वक्त कभी ऐसा होता था कि यू यू हैड अ पॉइंट वेयर छोड़ दो यार, क्यों इतनी मेहनत करनी, लाइक Meaning, we, when we shot the football matches, we had almost 600 to 800 crew members on the set, and everybody was focused. Everybody was intensely focused about what they were doing, passionate, and the operative cameramen which came in from all over the world. We had an operative cameraman from Russia, from Los Angeles, from Australia. We had a sports consultant from America. And we had so many operators from our country, who cover the football matches here. So the whole team was enjoying the whole process whenever we shot. Of course, we had to shoot in intervals because of COVID, the lockdowns. But the intensity of their passion never decreased. It was never diluted. that's amazing. You love being a producer, right? That's Yes. what is the one thing that you absolutely loved about being the producer for this film? Well, because it's a different film. This is a subject which I've never, I have made different kind of films. I've done a comedy in No Entry. I've done a family drama in Chidai. I've done a mass film in Loafer. I've done a character-driven film, Wo Saat Din. I've done a nationalist film like Bukar. I've done Hum Panch, which was an allegory of Mahabharat. So I've done various different, Wanted, which was out-and-out action film about a cop serving his, in the call of duty, does everything to see that he crushes the crime. So it's different kind of films that I've never been fixed with the genre. So this, for the first time, I've picked up on sports. The company was about underworld. So there are different films. I've never really stuck to one format or one genre. That's quite interesting कि जब आप अलग अलग काम करते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है, you don't get bored with what you do, right? You enjoy. अच्छा, यहाँ पे अब हमने इतने सारे आपसे मूवी के हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मूवी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। आई नो यूर अ बिग फूडी, तो मुझे ये बताइए कौन सी एक ऐसी चीज थी जो मैदान के सेट पे पॉपुलर थी या अक्सर खाई जाती थी? यार, अच्छा खाना खाया जाता था। अच्छा खाना और खाया, सब चीज इंक्लूडेड है, चिकन इंक्लूडेड है, दाल इंक्लूडेड है, राजमा है, लोबिया है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, गोभी आलू है, बैंगन का भरता है। मतलब मुझे तो खाना अच्छा हो। और आई प्रिफर इंडियन फूड, आई प्रिफर आंध्रा फूड, आई प्रिफर नॉर्थ इंडियन फूड, आई प्रिफर कबाब्स होते थे, सब कुछ। कोई भी लजीज खाना मुझे पसंद है। I prefer, I find the continental food bland. I find the Japanese food bland. Yeah, sometimes I enjoy Chinese food because I can add spices. But other than that, it's always Indian food, be it Andhra food, be it Chettinad food, be it Punjabi food, be it frontier food. So it's basically the food has got to be good, and that's something that I trip on, and I always look forward to having a good meal. अब क्योंकि फूड की बात की, मैं भी बहुत आई लाइक होम कुक्ड मील्स, लाइक आई एम नॉट अ फूडी बट आई लाइक होम कुक्ड Yes, मील्स। I like home cooked food. In fact, when we go for longer holidays, we used to go travel with, the family used to travel for longer holidays. We used to carry a cook along also. वाओ, आई विश आई कुड। And because we used to rent villas or rent apartments or stay in apartments where we could have our own food, my children and wife were fond of Japanese, continental, Italian food, but I had to come back home to eat home cooked food. यस, मी टू, इज द सेम। पूरे दिन में कुछ भी खाओ, रात में एक बार तो दाल रोटी होनी चाहिए, बिल्कुल पेट बिल्कुल भरा बिल्कुल। फील नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ये चाय पे चर्चा है तो मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या चाय आपके पसंदीदा चीजों में इंक्लूडेड है? I just have one cup of tea. That's it. That's That it. also in the morning with my breakfast. वो भी So, रोज नहीं, एक टाइम पे रोज पीता था, सुबह एक हाँ, शाम, पर अभी मैंने चाय कम कर दी। आई होप आपको चाय पे चर्चा पे मजा आया हो बात करके हमारे साथ। आपसे बात करके मजा आया, तो ऑटोमेटिकली चाय पे चर्चा में मजा है।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई विश यू गुड लक. और जाते जाते हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे बाय व्हाई दे शुड कम इन द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म? Well, this is a big screen film. It's a big screen drama. It is meant for cinema. It is meant to be seen in a cinema hall. Why is it called cinema? It is cinema because cine is, it's used for film, and ma is mother. So you can only enjoy cinema in cinema halls. So come to the theaters, enjoy cinema as we've produced for you. Maidaan is for cinemas and for everybody to enjoy in the cinema halls. थैंक यू सो मच. नमस्ते. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. So see you one day. See you.